Hello everyone, welcome back to your YouTube channel, Simplify Maths with Lalit. I'm your mathematics professor, Lalit Rankavat. I had to welcome each one of you in our today's session. Today, in one way, we can say it would be the last concept-wise video. We can add more PYQs or more question videos later on in our series, right? And so it's a very important class. So let's get started with today's class without any further delay. And yes, in the first and last class, we can have the quote, right? So we'll start with this beautiful quote. As you can see on your screen, the quote says that the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Okay, if you have earned a lot of money, fame, everything, like let's say it can be like anyone can take it away from you, but the knowledge you are gaining, right, the wisdom you will have, right, so no one can take it away from you. It will be with you lifelong. Okay, so always be a lifelong learner. With that code, let's get started with today's class, everyone. Okay, so circles class 8 this is the 8th class, right? For circles topic, yeah, my name is Lalit Rankavat. Okay, you know me, I know you. So chord, equation of chord, if midpoint is given, angle between two circles, radical axis, radical center, family of circles, है ना? So topic is going to be big, right? I will try to cover as quickly as possible, at least the concept part, है ना? So please be there till the end of the lecture so that you can basically understand. Okay, chalo, let's get started with the class, guys. Okay. Ding 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 ding. Okay, है ना? तो फटाफट start करते हैं हम. First is equation of chord if midpoint is given. What does that mean? Okay, so first thing, Anna, you should know 3-foot basic thing about that. So if this is a circle given to you and there is a midpoint, right? So let's say there is a point given, Anna. So there would be a lot of, let's say this is one of the chord. Okay, let me first draw. Okay, and this is your center. If you drop perpendicular from center, it bisects the chord, and let's say this point is given. This point is given. Right now I'm interested in writing the equation of this line. Okay, so one important thing you should write, okay, you should know about this is it can be asked in other way as well. So chord having midpoint is the smallest chord passing through that point. It is the smallest chord passing through that point. Okay, for example, you will have, okay, let me draw it here. So okay, so for example, this is one point. So this is one chord, this is another chord, this is another chord, but the smallest out of all of them, when this point would be the midpoint. Okay, for this line this is not midpoint, not midpoint, not midpoint, but for this line this is the midpoint, so this would be the smallest chord, enough. So they can give you, find the equation of the line which is passing through point 1, 2, and it should be the smallest one, enough. So you can always use this logic. Okay, ding ding ding. Okay, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, smallest chord passing through that. This is the first case. ठीक है, फटाफट से proof लिख लेते हैं. So first let's derive this. Let's say the center is 0, 0. Equation of circle is x square plus y square is equal to a square, and an easy thing. And this point which is given is x1, y1. Very good. And we are interested in equation of this line. चलो फटाफट लिख लेते हैं. So its equation would be y minus y1 m into x minus x1. M is the slope of this line. How I can find out slope? Let me first find out slope of this line. Let's say this line is m1. Slope would be y1 minus 0, x1 minus 0, which is y1 upon x1. This is slope of this line. So, and we know that slope of this line we have with this is nothing but m. Okay, so m into m1 is equal to minus 1. So m is equal to minus 1 upon m1, which is y1 upon x1. So slope of our line is minus m1 x1. So let's substitute here. So y minus y1 minus x1 y1 x minus x1. Let's cross multiply. Y y1 minus y1 square minus x1 square. No, it's not minus x1 square.
Very good, thank you so much. Okay, please avoid that. Minus x1 plus x1 square. Okay, let's take this on the other side. Is x1 plus y1 is equal to x1 square plus y1 square. Now what I can add on both the side is nothing but minus a square, and this is minus a square. What is this? Oh yes, you know this, this is s1. Okay, let me just write this here, or let this be added t equal to s1, not directly. Okay, so this is nothing but equation of tangent. Those who have not attended the class, please attend those class, it would be handy for you. T is equal to s1. So this is t is nothing but the equation of tangent. If the x square plus y square minus a square, this is our s. S1 means we substitute that point, x1 square plus y1 square minus a square. T is, we write this as xx1 y1. If there is 2gx and so on, we write that as g into x plus x1. Okay, but that is not the case. So t equal to s1 is the equation of the chord whose midpoint is x1 comma y1. ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, है ना, बहुत ही इजी, समझ में आएंगे. ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ chord. Okay, find equation of chord having midpoint. Okay, I'm writing fast, like intentionally, so that we can cover a lot of things in less time. But in case if the handwriting, if the midpoint is 1 comma minus 2 to this circle, है ना, कुछ प्रॉब्लम हैंडराइटिंग में तो बताना चार्ट में, x square plus y square equal to 9, है ना. Equation of chord having midpoint 1 comma minus 2 to this circle. So we know that its answer is t is equal to s1. T means xx1 y1 minus a square. S1 is x1 square plus y1 square minus a square. X1 comma y1 is this point, which is 1 comma minus 2. So 1 into x minus 2y is equal to x1 square, 1 square minus 2 square, which is 1 square plus 4 square, which is 5. X minus 2y equal to 5. Easy question. Yes, all with me, है ना, बहुत ईजी है. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. एक और क्वेश्चन भी देख सकते हैं अगर आप चाहो तो, इफ यू वांट. चलो, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, अभी एक बार के लिए थोड़ा सा रुकते हैं. नेक्स्ट, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, है ना. एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, एंड ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट और नॉट, लेट्स सी, अभी समझ में आएगा, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, है ना. सो वन थिंग यू शुड ऑलवेज नो, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स is equal to angle between two tangents, very important, at the point of intersection, point of tangency कुछ भी बोलो, ठीक है. Okay, so let's draw the diagram, let's understand, let's feel this. So this is first circle, dear students, and let's say this is the second circle. So at this point, this is one of the tangent, this point, this is another tangent, and we are interested in nothing but this angle between the tangents. Okay, so I'll just give you a brief idea. So for your understanding, what you can do is assume, this is like center C1, C2, and this is radius R2, this is R1, and this angle is theta. Okay, so actually how it will look like as when we talk about, okay, like this angle is theta. Okay, it will look like this complete angle is theta. Okay, now so the point is, okay, so we'll apply nothing but cosine rule, guys. This angle is theta, this is R1, this is R2, let's take this as D. D is always distance between the two centers, right, which we can find out by distance formula. So cos theta is equal to nothing but R1 square R2 square minus D square upon 2R1 R2. Those who know the cosine formula, great. Those who don't know, please remember the formula, okay, where R1 is radius, R2 is radius, D is distance between the two centers. And now quickly let's see some cases based on that. Okay, first case. Okay, let's see the cases quickly. First case, theta is equal to 0 degree.
theta is equal to 0 degree, cos 0 is 1, so this is equal to r1 square plus r2 square minus d square is equal to 2r1 r2. We'll take this on this side, this on this side. r1 square r2 square minus 2r1 r2 is equal to d square. This is r1 minus r2 square is equal to d square. Means theta is 0 degree. Angle between the two tangents is 0 degree. Means both the tangents are parallel, or we can say one and the same tangents only. So how it will look like? It will look like as this. This is first, this is second circle, and the between, when we talk about distance between the two, this is modulus d is equal to modulus r1 minus r2. We get this, right? So this is when both are touching internally. Okay, so this is the case. Okay, easy case. We have seen this internally touch. Fast, 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 fast. Chalo, let's see the second case. Second case we have with this is theta equal to 180 degree. Then cos 80 is minus 1. Minus 1 is equal to r1 square r2 square minus d square upon 2r1 r2. So we'll get r1 square plus r2 square. This is minus multiplied. We'll take this on the other side. 2r1 r2 equal to d square. Last case similar to that, just negative. r1 r2 square is equal to d square. D is equal to r1 plus r2, which means angle is 180 degree, which means both the circles are touching externally. Okay, so angle between the tangents would be 180 degree. Okay, chalo, second case, touch externally. Oh yes, let's see the third case, guys. And third case we have with us is theta, which is 90 degree. बहुत ही important. Cos 90 is 0. r1 square plus r2 square minus d square upon 2r1 r2. This is 0. So r1 square plus r2 square is equal to d square. Okay, if both the tangents are perpendicular, so r1 square plus r2 square. ठीक है, अभी हम फटाफट लिख लेते हैं r1. r1 would be, okay, इसको यहाँ solve करते हैं. देखो, r1 is g1 square plus f1 square minus c square, correct? c1 square. Similarly, r2 square g2 square plus f2 square minus c2 square. Easy. D is the distance between the two centers. One center is minus g1 comma minus f1, second is minus g2 comma minus f2. Let's find out the basically distance between them. G2 minus g1 whole square. Okay, so I will write g2 minus g1 whole square plus f1 minus f2 whole square. This is g1 square plus f1 square minus c1 square, g2 square f2 square minus c2 square is equal to g1 square plus g2 square plus f1 square. Let me write all of them together, minus 2 g1 g2 minus 2 f1 f2. अभी कुछ तो कैंसिल हो गया. g1 f1 g2 f2, g1 f1 g2 f2. Okay, क्या बच गया? c1 square c2 square. So I can write this as, final condition is I will take this on the other side. So 2 g1 g2 plus 2 f1 f2 is equal to c1 square plus c2 square. हाँ, square नहीं आ रहा. ओहो हाँ, my mistake. Under root g1 square plus f1 square minus c. हाँ, correct. ये extra लिख दिया. Apologies for the same, guys. Okay, so this would be c1 plus c2. Very, very important formula. If the two circles are orthogonal means both are at 90 degree. Orthogonal means circles intersect at 90 degree. Direct condition we have to use 2 g1 g2 plus 2 f1 f2 is equal to c1 plus c2. Again, come again with me. 2 g1 g2 plus 2 f1 f2 plus is equal to c1 plus c2. Okay, this is the condition if the two circles are orthogonal. Angle between the two tangents is cos theta is r1 square plus r2 square minus d square upon 2 r1 r2. Okay, so we know this, you know this. Let's move towards question. Yes, everyone, you can just pause and note down anything if you want. ठीक है, चलो, great guys. अभी क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं, है ना. क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन नहीं है. एक एग्जांपल के लिए, there are two circles. Let me directly write the equation. X square plus y square plus x plus y equal to 0. This is the first circle. Second circle we have with this is x square plus y square plus x minus y equal to 0. Find
the angle between two circles. For that I want R1, R2, everything. Okay, chalo, let's find out. So G is nothing but, if you see my, like this is 2G, so G1 is half, F1 is half, G2 is half, F2 is minus half. Okay, C1 is 0, C2 is 0. Okay, let me just find out radius. Either I can find, okay, just for your convenience I'm solving it complete, but directly we can see also. R1 is G1 square plus F1 square minus C, guys. Yes, G1 square 1 by 4, F1 square is also 1 by 4 minus 0. 1 by 4, 1 by 4, 2 by 4. 2 by 4 is 1 by 2. 1 by 2 is 1 by root 2. Similarly, R2, G2 square plus F2 square minus C. Minus का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0. This is also 1 by root 2. ठीक है? And D is distance between the two. So G1 minus G2, which is 0 square, plus 1 by 2 minus of 1 by 2, which is 1. Okay, 1 by 2. Array? Yes or no? 0 plus 1 by 2 plus 1 is 1. 1 square, which is 1. ठीक है? D square या D कुछ भी लिख लो. So R1 square is half, R2 square is half, D square is 1. Find out R1 plus R2 square. Half plus half, which is 1, which is D square. Oh, if R1 square plus R2 square, both the circles are orthogonal, first condition. Okay, or directly you can apply this condition, cos theta. Cos theta is R1 square. R1 square is half, R2 square is half minus D square, which is 0. Cos theta is 0, theta is 90 degree. Either by this, or रुको तीसरा भी देखते हैं. 2G1 G2 दिख रहा है ना, 2G1 G2, 2F1 F2 is equal to C1 plus C2. 2G1 G2, G1 G2 कितना है? 1 by 2, 1 by 2 is 1 by 4, plus 2 into minus 1 by 4 is equal to 0. So 2 by 4 half minus half equal to 0, 0 equal to 0 means this condition is satisfied. So the circles are orthogonal. Everywhere you can find out. ठीक है, मेकिंग सेंस, इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक लाइक कर दो. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े. वेरी गुड गाइस. सो आगे रेडिकल पे आ जाते हैं, है ना. रेडिकल एक्सिस जो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, है ना. हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो पाए इस सेशन को टाइप अप करें, बट वी वोंट जस्ट रश एंड स्किप थिंग्स. रेडिकल एक्सिस, व्हाट इज अ रेडिकल एक्सिस, है ना. रेडिकल एक्सिस बहुत ईजी चीज़ है, फटाफट लिख लेते हैं. फर्स्ट लाइन, मतलब समझने में इजी है. लाइन विच रिमेन्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू सर्कल्स is called radical axis and locus of all such points. ठीक है, one and the same thing. मतलब समझते हैं ना, मतलब important है. Definition कौन पूछा एग्जाम में? This is one circle, this is another circle. Now take all the points which are at equal distance, है ना. Not necessary same radius, तो हम अलग circle बनाते हैं. ठीक है, हाँ. Okay, so there is a point here which is at, let's say, 5 centimeter. If I draw a tangent, its length of tangent here is 5, length is 5. If there is a point here, okay, when we talk about, see, one point, if you draw a tangent, length of tangent, you know, root S1, right? This length and this length is same. Similarly, there is one point here, this length is same. And similarly, there is lot of points. So you will get a lot of points. So collection of all such points, or locus of all such points at this distance would remain same, is what we call as radical axis. Okay, let's say the circle is S1, this is S2, this length is root S2, this length is root S1. So root S1 is equal to root S2, S1 is equal to S2. So S1 minus S2 equal to 0. Oh, this is nothing but equation of radical axis. Just subtract both of them, this would be 0. No. For example, S1 minus S2 0, ये क्वेश्चन किया ना, इसमें देखो इक्वेशन क्या बनेगी. S1, मैं यहाँ पे चलो एक बार लिख के फटाफट बता देता हूँ. S1 is nothing but x square y square plus x plus y equal to 0, x square y square plus x minus y equal to 0. S1 minus S2. Okay, S1 minus S2, if I have to find out, subtract both of them. This will get cancelled, this will get cancelled, this will get cancelled. This is y plus y. Y plus y is 0, which is 2y equal to 0, which is x-axis, which makes sense. Okay, for both the circles, let's not draw the diagram, but we'll understand. Okay, if you want, we can try. So see, first circle is
passing through origin, center is minus g comma minus f, minus half comma half, minus half comma half is here, and it is passing through this, and its radius is nothing but 1. Radius is half. हाँ ठीक है, somewhat like this, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा. This is for circle. Second circle where it is minus half comma y is half, कुछ यहाँ पे हो जाएगा. हाँ, okay, here both are not touching, like both are intersecting, so this common chord is the radical axis, which we'll see the next case, but got the point, right? S1 minus S2 is the radical axis. What is radical axis? यहाँ में समझ में आया. radical axis at any collection of all such points, if we draw, the length of tangent will remain same. Easy peasy lemon squeezy everyone. ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. और इसमें क्या क्या केस अभी हम सब समझ लेंगे, ठीक है. चलो, तो ये हमें समझ में आया रेडिकल एक्सिस. ओके, अब कुछ केसेस लिख लेते हैं इसके. रेडिकल सेंटर पे भी आएंगे, टेंशन मत लो. फर्स्ट केस, इफ सर्कल्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, देन कॉमन टेंजेंट इज आर नथिंग बट रेडिकल एक्सिस. इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी. S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, है ना, इजी. फर्स्ट केस. सेकेंड केस देखते हैं. इफ बोथ आर इंटरसेक्टिंग, जो अभी हमने एग्जांपल देखा, देन विच इज द रेडिकल एक्सिस? दिस इज अ कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड मतलब जो दोनों में हो. सो दिस कॉमन कॉर्ड, ओके, दिस इज आर रेडिकल एक्सिस. कॉमन कॉर्ड इज आर रेडिकल एक्सिस, है ना. इजी है कि नहीं बताओ? इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ फास्ट? S1 माइनस S2 0. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, काफी स्मार्ट अड़िए स्टूडेंट्स. चलिए नेक्स्ट केस. वाह, इसमें दूसरा डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक, मैं बना देता हूँ. टचिंग इंटरनली, अगेन कॉमन टेंजेंट इज आर रेडिकल एक्सिस, है ना. तो बस समझने के लिए, फील के लिए, S1 माइनस S2 इज 0. अब एक चौथा केस होता है, थोड़ा सा अजीब सा, देखो ध्यान से. फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस, इफ बोथ आर इन, ऐसे अंदर है ना, तो क्या होगा? सो रेडिकल एक्सिस मतलब देयर इज वन पॉइंट हियर, इट्स डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज सेम. सो ऐसे कुछ बाहर से लाइन हो जाती है, समथिंग लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, है ना. सो ऐसे बाहर एक लाइन हो जाएगी, वो रेडिकल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है. तो ऑब्वियसली रेडिकल एक्सिस. इक्वेशन अगेन सेम, S1 माइनस S2 0. अभी एक केस होता है वेयर, फिफ्थ केस में यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर देयर इज नो रेडिकल एक्सिस. ओके, like this is one circle, this is another circle, but both are concentric circle. Concentric circle, think कोई भी केस में सोचना, there is no RA. RA means radical axis. ये concentric नहीं है, concentric means center is same, ठीक है. चलो easy, yes, आगे बढ़े. ओके guys, ठीक है, ओके. हाँ, तो देखो ये क्या, एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे कहीं जगह है क्या? यहाँ लिख लेते हैं. एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हमने लिखा है. इफ टू सर्कल्स, ध्यान रखना है, आर सच दैट, है ना, दो सर्कल ऐसा है कि सच दैट वन सर्कल इंटरसेक्टिंग अदर सर्कल. अभी है ना, थोड़ा सा इमेजिन करो, देन आई विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. इंटरसेक्टिंग अनदर सर्कल such that the diameter of smaller circle is the common chord, then radical axis will have their center. Will have their center means radical axis will pass through their center. मतलब देखते हैं, है ना, डायग्राम से. This is one circle. Now I am saying that another circle is such that, okay, its common chord is the diameter. Common chord is diameter means this is center, and common chord is only our radical axis. Common chord ही radical axis है और वो center से pass हो रहा है. So वही चीज लिखी है. Radical axis is common chord, and in case common chord is diameter, not in all case, in some case let's say is diameter. So radical axis will pass through center, है ना, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है अब हम, let's move towards radical center guys. सही है, स्पीड तो सही चल रही है. अभी हमें क्वेश्चन भी देखेंगे, थोड़ा हम आइडिया भी लेंगे, है ना. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है. जस्ट डोंट गिव अप, बी देयर टिल द एंड गाइस, है ना.
रेडिकल सेंटर क्या होता है देखो समझते हैं. इफ वी टेक 3 सर्कल्स है ना, ये एक सर्कल हुआ, दिस इज अनदर सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल. क्या बढ़िया डायग्राम नहीं बन गया, क्या बोल रहे हो, है ना. सो दिस इज रेडिकल सेंटर, सॉरी रेडिकल एक्सिस फॉर S1 एंड S2. इसको L1 मान लेते हैं, है ना, रेडिकल एक्सिस. Similarly for S2 and S3 would be this L2, and similarly for S1 and S2 would be this. This is L3. So 3 radical axes will pass through a center, which is what we call is, guys, yes, have a huge round of applause for one and only radical center. Okay, चलो अब रेडिकल सेंटर क्या फटाफट लिख लेते हैं. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 रेडिकल एक्सिस. 3 रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट रेडिकल सेंटर. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट वुड ऑलवेज बी सेम. मतलब क्या हुआ, इफ फ्रॉम दिस पॉइंट लेट्स से आई एम ड्राइंग अ टेंजेंट, दिस टेंजेंट, this tangent, this tangent, है ना. Because see, for this 2 circle, this length are equal. For this 2 circle, this 2 length are equal. So तीनों आपस में equal होंगे, है ना. And from center, obviously, it is perpendicular. Radius is perpendicular to tangent. ठीक है. तभी हम क्या बोल रहे थे, अभी हम next point लिख लेते हैं. Next point is, it is the point from which, अरे कहाँ गए, मैं बीच में आ गया क्या, चलो मैं हट जाता हूँ. फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट टू 3 सर्कल्स आर इक्वल, है ना. ये समझ में, 3 टेंजेंट की लेंथ इक्वल है. चलो ये इजी है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव दिस इज व्हाइट कलर ले लेते हैं, कलर कम है हमारे पास, ब्लैक पीपीटी में. ओके, अभी हाउ टू फाइंड आउट रेडिकल सेंटर, बहुत इजी है. First tell me how you will find out L1. S1 is given, S2 is given. How you will find out S1? L1, very good. S1 minus S2 equal to 0. यहाँ से L1 मिल जाएगा, easy. Now tell me how you will find out L2. L2 would be, yes guys, S2 minus S3 equal to 0. ठीक है. 2 equation, solve them. 2 equation को solve करेंगे, we can get X and Y, which is nothing but our radical center. अरे बताओ, easy है कि नहीं. This is equation S1 S2 is given in the question, है ना. Subtract करना सिखाया था अभी. Subtract that, you will get one linear equation, L2. S2 minus S3, you will get another. Solve the 2 equations, you will get a point which is nothing but radical center. Can we use S1 and S3? Yes, any 2. Don't take 3, take any 2. ठीक है. Sorry. Okay, take any 2 axis. Any 2 lines, and intersection of that would be nothing but radical center. Hope that makes sense. ठीक है. ओके, एक अच्छा खासा नोट भी लिख लें क्या, मैं यहीं पर जगह है क्या, चलो आगे लिख लेते हैं. नोट क्या, सर्कल, ये बहुत बढ़िया चीज है. सर्कल विथ सेंटर एज रेडिकल एक्सिस. ओ रेडिकल एक्सिस, वाह, सेंटर. सर्कल विथ सेंटर एज रेडिकल सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट. जो तीनों इक्वल है, कोई भी एक बना लो. फ्रॉम रेडिकल सेंटर, लेंथ कितना है, फ्रॉम रेडिकल सेंटर विल कट ऑल 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली. अरे ये क्या हो गया, बहुत टफ चीज हो गई. नहीं, ओके. और एक और स्टेटमेंट लिख लो, फिर आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू टुगेदर. इफ 3 सर्कल्स आर ड्रॉन, if 3 circles are drawn on 3 sides of triangle, taking them as diameter, then orthocenter will be the radical center of all 3 circles. अभी क्या हो गया, इतना भारी स्टेटमेंट क्या है, समझते हैं. देखो, फर्स्ट इज if this is the center, right? If from here, if I'm drawing any circle and with center as this and nothing but
दिस इज माई, हाँ ठीक है, ऐसा सा कुछ, ठीक है, भावनाओं को समझना. Okay, not necessary passing through center, but with this as center. So see, angle between, when we talk about two circle is angle between them tangents, right? So at this point when we talk about, this is a tangent, this is a tangent, this angle is 90 degree. On similar basis आप बता सकते हो like this and this angle is 90 degree and angle is 90 degree. So what we are saying here is that, let's say this is a circle S4. S4, S2 would be orthogonal. Orthogonal means both intersect at 90 degree. S4, S3 orthogonal, S1, S3 orthogonal. When, if a circle is drawn with the center as radical center and radius as length of nothing but tangent, drawn from radical center to any of the nothing but circle. ठीक है, ये समझ में आया. Next क्या है? First point clear? Okay, next point. If three circles are drawn on three sides of a triangle, ठीक है, means if this is a triangle, keeping this as diameter, this as center, if you draw this as your one circle, this is your another circle, this is your third circle. Wow, कितना अच्छा pattern बन गया ना. Then the ortho center is intersection of all the perpendiculars, right? Altitudes, bisector नहीं, only altitudes is your nothing but radical center. तो बस इसको याद रखो तो थोड़ा easy रहेगा. ठीक है, समझ में आ गया मतलब क्या हुआ. अरे draw one. Okay, this is given, draw another, this is third, draw another. Okay, so when we talk about, so if three circles are drawn on three sides of a triangle taking them as diameter, then the ortho center will be the radical center of three center. Three circle का ortho radical center कैसे निकालेंगे? We can find out the common radical axis for three circles, like this circle and then this circle. This is common chord and common chord, which is the side only, right? And their intersection of all the perpendiculars यहाँ से भी ले लो, is nothing but your radical center and ortho center. Radical center of the three circles, ortho center of the triangle. ठीक है, चलो ध्यान रखना है ना. बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो क्लियर हो गया, आसान है, समझ में आया. रेडिकल सेंटर, हाउ टू फाइंड आउट रेडिकल सेंटर? S1 minus S2 will give you equal to 0, will give you first radical axis. S2 minus S3 equal to 0 will give you the second radical axis. Solve them, you will get the radical center. ठीक है, आसान है. Yes or no guys? Everyone with me? Yes. Okay. अब हम देखते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स. फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या कहता है? ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स बहुत ही इजी चीज़ है, टफ चीज़ नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट. फर्स्ट केस, सो इट्स सिमिलर टू, इफ यू रिमेंबर प्लेन्स में पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2, लाइन्स L1 प्लस लैम्डा L2. हाँ ठीक है, चलो फर्स्ट लाइन, फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of fixed circle and fixed line, है ना. इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड होगा ना, तो प्लीज बी देयर. फिक्स लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सर्कल है, s equal to 0, its equation is given, and then there is a line L equal to 0. So how many circles you can draw? Yes guys, infinite. This is one circle, this is second circle, this is third circle. So basically passing through this 2 point, I can draw infinite circle. So equation is very easy. There it was L1 plus lambda L2 equal to 0. It should be S1 plus lambda S2 equal to 0, which we'll see later on. But here there is a line and there is a circle, so it should be S plus lambda L equal to 0. बहुत ही easy है. These are the 2 points. As lambda keeps on changing, we'll have various values. Lambda belongs to R here. So this is how to find out lambda. They will give you one condition. From the condition you will find how. अभी क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा सा पेशेंस. मैं इसके 4 केसेस फटाफट देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं, क्लास एंड करते हैं. ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स. अब क्या होगा? बहुत ईजी है. दिस इज सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0. अब इन 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल्स होंगे? सी दिस इज फर्स्ट सर्कल, this is second circle, this is third circle, this is fourth circle. There are infinite circle. S1 plus lambda S2 equal to 0.
इजी है कि नहीं ये बताओ, है ना इजी। नाउ फाइनली दिस शुड बी अ सर्कल, तो उसके लिए एक कंडीशन बस लैम्डा के लिए हम लिख लेंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, बट lambda cannot take the value in which x square and y square get cancelled out. Okay, lambda cannot take value for which x square and y square terms get cancelled out. वरना क्या होगा देखो, अगर कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर, है ना, बस वो हमें चेक करना है, वो भी हम देखेंगे क्वेश्चन में, x स्क्वायर y स्क्वायर, सो वो एक रेडिकल एक्सिस से बच जाएगा पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इट वुड बी लीनियर। ओके ठीक है, इजी है ना, टफ नहीं है, क्वेश्चन करेंगे थोड़ा क्लैरिटी आएगा, थोड़ा सा पेशेंस है। ठीक है, सेकंड थर्ड केस फैमिली ऑफ लाइन सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 केस और है बस, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 गिवन 2 पॉइंट्स और 2 गिवन पॉइंट्स, कुछ भी मान लो। तो देखो बहुत आसान है, 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2। I know 2 conditions right now. If there is a circle, there is a line, I can write equation s plus lambda l equal to 0. If there is a circle, there is another circle, s1 plus lambda s2 equal to 0. If either of the 2 cases given, I can tell you. Okay? First, from this 2 point, can I write the equation of line? Let's say this is l equal to 0. How to write equation? Y minus y1 m into x minus x1. How to write? Nothing but equation like slope y2 minus y1 upon x2 minus x1, है ना? Solve this, we'll get l equal to 0. अभी हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं ना, बस समझते हैं। Now from 2 points, can you write any circle which is passing through these 2 lines? Any circle? Yes, very good. We can write equation of a circle which is nothing but in diametric form. Diametric form equation is x minus x1, x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. This is a circle which is passing through this point. So I got, from this I can write this is s equal to 0. So now I have a circle and I have a line. From this how many circles can pass? Infinite, है ना, this red one. Okay, infinite. So equation would be s plus lambda l equal to 0. S is, just remember this is the case. How to write equation in diametric form you know, how to write equation you know. अब now don't bug up this formula, unnecessary हम confused हो जाएंगे. If you want I can write it down, है ना, वो बहुत ही lengthy भी लगेगा. This is our circle plus lambda l. L is y minus y1, and we'll take this on the other side, minus y2 minus y1 upon x2 minus x1. बिल्कुल याद नहीं करना है फॉर्मूला, अप्रोच समझो, क्वेश्चन वुड बी इजी। ठीक है, इजी, यस। थर्ड केस, ऑल विथ मी, 2 points are given. First we'll write the equation and then we'll write equation of the diametric form circle. This is s equal to 0, this is lambda equal to 0, s plus lambda l. As simple sweet as possible. ठीक है, चलो अभी लास्ट केस देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन तो देख लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस गाइस, थोड़ा सा। फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग गिवन लाइन एट अ पॉइंट, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग गिवन लाइन एट अ पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि दैट देयर इज अ लाइन एंड देन देयर इज अ पॉइंट। अब इसमें से कितने, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने सर्कल्स है? 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल एंड सो ऑन। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। नाउ आई नो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज L equal to 0. Can I write equation of this circle? Is this circle? Yes, it is a circle. Which circle? Can you tell me? Yes, yes guys, awesome, those who are able to guess. Point circle. What is a point circle? Point circle having radius 0. So its equation is, let's say this point is given as x1 comma y1. Its center is that only, x minus x1 square plus y minus y1 square, and radius is 0 equal to 0. ये point circle की equation है। This is s equal to 0. So our equation is s plus lambda l equal to 0, where s is x minus x1 square plus y minus y1 square plus lambda times l is given in the question. तो क्या easy है कि नहीं बताओ? बहुत easy, interesting है कि नहीं everyone? Yes, है ना? चलो क्वेश्चन देखिए इस पे फास्ट, है ना? 2 क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं हम, हमारे लिए इतनी मेहनत की हमने। चलो गाइस, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1. Question 1 we have with us, dear students. Question is find EOC, equation of circle passing through, है ना? This is passing through. क्या है? Intersection of 2 circles. कौन से 2 सर्कल है? फास्ट. Equation of 2 circles we have x square
plus y square minus 9 equal to 0, and we have x square plus y square minus 6x minus 8y equal to 0, which passes through 5, 4. समझ में आया? नहीं आया समझ में? समझते हैं। देखो, एक सर्कल है S1, एक सर्कल है S2, इनमें से पास होने वाले कितने सर्कल है? इन्फिनाइट सर्कल्स. What are the equation of those infinite circle? S1 plus lambda S2. Now I will get this circle. Now it is passing through 5, 4. I will substitute here, like there would be one of the circle which is passing through 5, 4. Write this equation. S1 is लिखते हैं x square plus y square minus 9 plus lambda into S2 x square y square minus 6x minus 8y equal to 0. अब now this circle is passing through which ठीक है, जो मैं बता रहा था ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 1 प्लस लैम्डा, वो 0 नहीं होना चाहिए, बस वही वहां पे कंडीशन लिखी थी. हाँ, तभी हम क्या बोल रहे हैं? इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 5, 4. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा इंटू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 6 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 4 इक्वल टू 0. अब देखो ध्यान से, 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 41, 41, 25 प्लस 16 41, 41 माइनस 9 32 जैसा कुछ आ रहा है. लैम्डा इंटू 36 और 25 41, चलो 41 माइनस साथ में लिख लेते हैं 30 एंड 32 62. ओहो, कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं. 30 एंड 32 62 सही है. सो 32 प्लस लैम्डा इंटू ये कितना आ गया 1 2 माइनस 21. सो आई विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 32 अपॉन 21. किसी से भी कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये इतना अजीब सा आंसर आया क्या? हाँ, 32/21 सही है. अभी नाउ द इक्वेशन वुड बी, इक्वेशन इज सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दो. देखो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस मैं लिख देता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस 32 अपॉन 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0. 21 यहाँ मल्टीप्लाई होगा एंड देन यू कैन नॉर्मली ओपन दिस. इजी. S1 plus lambda S2 equal to 0. Substitute the point 5, 4 here. Solve this, get lambda and substitute again. Easy everyone, all with me. सबको समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बढ़िया लग रहा है. ग्रेट गाइज, है ना? गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. सही लग रहा है तो चलो, अभी तक आप हैं तो ग्रेट, है ना? ऑसम. एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप कर ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये क्वेश्चन ले लें कि ये क्वेश्चन ले लें? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट -1, 2. -1, 2 मीन सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जो अलग से फैमिली ऑफ सर्कल्स में ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब बहुत सारे सर्कल्स इसके लिए, तो इससे हमें लैम्डा मिल जाएगा. ओके. एन टचेस, अभी क्या गिवन है? एन टचेस अ सर्कल at 0, 0. इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स देर इज अ सर्कल एंड 0, 0 इज ऑन द सर्कल. कैसे चेक कर सकते हैं? C0, 0, 0, 0. सो दिस इज अ टेंजेंट. मीन्स देर इज अ लाइन, देर इज अ पॉइंट. मीन्स there is a line, there is a point. So how many circles? Infinite circle. How to write? S plus lambda L equal to 0. So first find equation of this line and circle. Circle is point circle, which equation is x minus x1 square plus y minus y1 square, है ना? याद आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया. तो अभी हम लिखना सीखते हैं ना, slowly. What is the center? Center is -8 upon -4. So 2, 3. And the point is 0, 0. So I have to first write equation of this line L equal to 0. इस इक्वेशन कैसे होगी? इक्वेशन इज लाइक पासिंग थ्रू 0, 0, y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0. अब थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं, सब लोग समझ सकते हैं. फोकस. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 3 minus 0 upon 2 minus 0, which is 3/2. If this is 3/2, its slope is 3/2. What is this slope? Its slope is reciprocal and negative, -2/3. अरे बोलो, समझ में आ रहा है सबको? Then this is 3y is equal to -2x. 2x plus 3y equal to 0. This is my L line. अभी हमें क्या चाहिए? पॉइंट. पॉइंट इज 0, 0. तो क्या ही है, हो गया क्वेश्चन. हा. Yes. Okay guys. So our equation is s plus lambda L equal to 0. Point is our point x minus 0 square, y minus 0 square. Lambda times line is
2x plus 3y equal to 0. Is this the answer? No. This circle now, from this infinite circles are passing, one circle is passing through -1, 2. ये अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. एक्चुअली द इक्वेशन इज x स्क्वायर y स्क्वायर लैम्डा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0. पॉइंट रखते हैं -1, 2. -1 स्क्वायर डायरेक्ट 1, 2 स्क्वायर 4, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 2 6, ठीक है. दिख रहा है 5 4. ओहो, फिर गंदा आंसर. लैम्डा इज -5/4. अब किस में रख देंगे? इसमें रख देते हैं, ठीक है. तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, यहाँ पे रख दो. चलो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5/4 2x प्लस 3y इक्वल टू 0. अब ये सॉल्व कर लेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लैम्डा सही नहीं. लैम्डा कुछ गलत कर दिया मैंने. 3y प्लस 4x आना चाहिए यार. 2x क्यों आ रहा है हमारा? ओह अच्छा, सेंटर. दिस इज डिवाइड 4. ओके, दिस इज 4. माय बैड, सो सॉरी गाइस. सो ये हो जाएगा 3/4. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. 4 आ जाएगा. सो दिस वुड बी 8. नहीं, दिस इज 4. सो -4 आ जाएगा. x कितना है? एक सेकेंड, यहाँ पे भी रेस कर देते हैं, ठीक है. सही है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है अभी. दिस इज 4x. x कितना था? तो -4. तो अब क्या दिक्कत है? 4x प्लस 3y -1, 2. अब सही है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे. -3 प्लस 8 4x -1, 2 है. चलो, गलती सब्स्टिट्यूशन. ओके, ठीक है, नेवर माइंड. या, सो दिस इज 2. सो दिस इज 5/2. ठीक है, समझ गए ना सब लोग? 5/2 प्लस. अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. बन गया, समझ में आ गया? ऑल विथ मी, ग्रेट गाइस. अब हम फटाफट से रिवाइज कर लें एक बार. क्या पढ़ा आज हमने? इतनी मेहनत करी है, बहुत बढ़िया सीखा है ना, बहुत बढ़िया. आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, दोज आर स्टिल देयर, है ना. ग्रेट गाइस, यू आर डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू योर फ्यूचर, है ना. बहुत बढ़िया. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इफ मिड पॉइंट इज गिवन. अगर कोई भी एक सर्कल हो, उसके अंदर एक कहीं पे भी पॉइंट हो, वो पॉइंट, इफ दे आर सेइंग दैट दिस इज द मिड पॉइंट और passing through any chord is the smallest chord, तो हमेशा that is the midpoint only, है ना. So equation is t equal to s1. t is tangent, s1 generally how we substitute the point. Next, इस पे क्वेश्चन देख लिया हमने. Then we discuss angle between two circle cos theta r1 square r2 square minus d square upon 2 r1 r2. theta is angle between the two tangents. First case, ठीक है, if theta is 0, d is r1 minus r2 internally touch, ठीक है. 180 degree externally touch. theta is 90 degree, very important, orthogonal. 2 g1 g2 plus 2 f1 f2 equal to c1 plus c2. d क्या है? distance between the two centers, right? चलो, awesome guys. Then we know this two circles. Then we find out the angle between the two tangents, which is 90 degree. Radical axis is locus of collection of all such points where if we drop where length of tangent is same, like line which remains at equal distance from two circles, ठीक है. Radical axis equation is s1 minus s2 equal to 0. Very important, ठीक है. फिर ये क्या था? हाँ, ये आगे हम देख लेंगे. चलो, फिर s1 minus s2, s1 minus s2, s1 minus s2, s1 minus s2. Here no, in concentric circle no radical axis. यहाँ पे कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट, यहाँ बाहर की कोई लाइन हो जाएगी, यहाँ पे भी कॉमन टेंजेंट, ठीक है. हाँ, फिर वो पॉइंट ये था कि बोथ आर इंटरसेक्टिंग एंड इफ दिस कॉमन कॉर्ड है ना इज डायमीटर ऑफ दिस. डायमीटर मतलब ऐसा छोटा सा सर्कल हो गया, तो देन रेडिकल एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस. तो वो कॉमन सेंस है. फिर हाँ, रेडिकल सेंटर क्या होता है? इफ यू टेक 3 circles, 3 radical axes are possible. Intersection of 3 radical axes is radical center, and from this the length of tangents are same. Length of, how to find out? s1 minus s2 will get first radical axis, s2 minus s3 second radical axis, and solve them. You will get the radical center, which is nothing but x comma y, है ना. इनको solve करना है. चलो, नोट, सर्कल विथ सेंटर इज रेडिकल एक्सिस सेंटर. अभी वही, इसको सेंटर रख के और इसको रेडियस रख के सर्कल बनाएंगे. सो दिस इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द 3, ठीक है. एंड इफ 3 लाइन्स आर गिवन, वो हमने यहाँ पे देख लिया था. इफ इट टेक डायमीटर देन रेडिकल सेंटर इज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है. पॉइंट ध्यान रखो. फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स, फिक्स लाइन, फिक्स्ड सर्कल गिवन, s plus lambda equal to 0, okay. So and if 2 circles are given, s1 plus lambda is to 0, just make sure lambda should not take the value where x square, coefficient of x square and y square would become 0, ठीक है. वो नहीं होना चाहिए. 2 given points, 2 given point at the first, right? Equation of line which is l equal to 0, you know by 2 point form.
इक्वेशन इन डायमेट्रिक फॉर्म, यू नो s plus lambda equal to 0. बूम. ठीक है. चलो नेक्स्ट वी हैव when we talk about family of circles touching given line and one point, we'll consider that point is nothing but our which point is very good point circle. ठीक है. Point circle equation is this and this is L, so s plus lambda equal to 0, and then we have seen two questions based on that. ठीक है. हाँ, ये हमने देख लिया था. ओके, ये भी देख लिया था. Yeah guys, so finally we come to the end of the class. We'll have SLQ, surprise logical question. So I'll give you the question. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में दोनों डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. लास्ट क्लास में, ठीक है. ओके, क्वेश्चन इज VIT, कॉलेज वाला नहीं है ना. ओके, VIT-MIN, 3 words answer. Surprise logical question. Based on this you can form a word. तो think क्या होगा. ठीक है. चलो. So everyone, thank you so much for staying till so end, till 51-52 minutes. You have done, you are doing exceptionally well, you are doing great for yourself. Please like the video, comment in the basically video, so that it reaches to other audience as well, right? And share with your friends if you find this series, and one way we have completed the basic, at least the theory for circles. We'll add few lectures in the future for some more questions and all practice session, and we'll start the new chapter. Which chapter you want, please let us know in the comment section. And you guys are so awesome. So make sure you revise, you write down notes, Anna, because just seeing the video won't help, and try new questions. Okay. So thank you so much, everyone. I'm your mathematics professor Lalit Rankaut signing off. Work hard, study hard, and be smart. You all are very awesome. Okay. So take care, everyone.